गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वीनस ऑर्बिटर मिशन। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली इंडिया का पहला मिशन टू वीनस जो है उसको अप्रूवल दे दिया है और इसरो प्लान कर रहा है कि मार्च 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का ये सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा आफ्टर मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये वीनस मिशन जो है प्लैनेट के सरफेस, सब सरफेस, एटमॉस्फेयर और आयोनोस्फेयर को जो है ऑर्बिट से जो है वो स्टडी करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा कि वीनस का इंटरेक्शन सन के साथ कैसे होता है। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो एक ऑर्बिटर प्लेस करेगा अराउंड वीनस, ताकि डेटा जो है वो क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन और पोटेंशियल वॉल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटी पर इकट्ठा किया जा सके। तो ये साइंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज को भी जो है एक्सप्लोर करेगा। सरफेस के प्रोसेसेस और सब सरफेस स्ट्रेटोग्राफी जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, डायनामिक्स जो होते हैं वीनस के एटमॉस्फेयर के, उसको स्टडी करेगा। एक्सप्लोर करेगा सोलर विंड इंटरेक्शंस और जो है वीनस के जो आयनोस्फेयर से होती है। फिर अर्थ और वीनस जो है हर 19 महीने में सबसे क्लोज आ जाते हैं, तो उसी के हिसाब से हम मिशन को प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये मिशन में जो है 100 kg ऑफ साइंटिफिक पेलोड जो है वो लेकर जाएंगे और एक सिमिलर अप्रोच जो इंडिया के प्रीवियस स्पेस मिशंस में थी उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये पेलोड जो हैं एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स के फ्लो को स्टडी करने के लिए। तो मिशन जो है वो इंडिया का पहला अटैम्प्ट होगा एरो ब्रेकिंग में भी, जो कि एक टेक्निक है जिससे कि स्पेसक्राफ्ट को एटमॉस्फेरिक ड्रैग का यूज़ करते हुए स्लो डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियली सैटेलाइट को एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस करेगा अराउंड वीनस, ताकि फ्यूल को सेव किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 6 महीने लग जाएंगे प्रिसाइज कंट्रोल करने के लिए। एक बार जब डिज़ायर्ड ऑर्बिट अचीव कर लिया तो सैटेलाइट जो है वो एग्जिट कर देगी वीनस के एटमॉस्फेयर को और अवॉइड करेगी यूजिंग एक्सेस फ्यूल, ताकि उसका ऑर्बिट मेंटेन किया जा सके। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है बिकॉज उनका सिमिलर मास है, डेंसिटी है, साइज़ है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वीनस के पास एक समय पर वाटर होता था, लेकिन अब वो ड्राई और डस्टी है। सरफेस का टेम्परेचर लगभग 462 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हॉटर देन मरकरी है। और यहाँ पर रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है। वीनस में जो है एक टाइम पर ओशंस होते थे, लेकिन अब वो स्वेल्टरिंग ग्रीन हाउस वर्ल्ड का पार्ट बन चुका है। साइंटिस्ट होप करते हैं कि वो अनकवर कर सकें क्लूज़ को अबाउट क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स और प्लानिटरी एवोल्यूशन, जब वो वीनस के क्लाइमेट को अर्थ से कंपेयर कर सकेंगे। तो वीनस को स्टडी करने से अर्थ के फ्यूचर के बारे में भी हम इंसाइट्स जो है वो गेन कर सकते हैं। अर्थ पर जो अगर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 बार का है, तो वीनस पर जो है वो 100 बार का है। तो इसलिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है वो 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड का है, जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं, और बहुत ही स्लो रोटेट करता है वीनस। आपको पता होगा कि वीनस जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लैनेट्स उल्टा रोटेट करता है, और एक दिन वीनस पर 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग 462 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हॉटर देन मरकरी है। कोई भी लैंडर यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया है लगभग कुछ घंटे के से ज़्यादा। अगर इंडिया एक्सप्लोर कर लेता है इसको, तो एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को जो है वो ज्वाइन कर लेगा इंडिया, जिनके पास साइंटिफिक एडवांस्ड प्लानिटरी साइंस प्रोग्राम्स की जो है वो पावर है। तो अभी तक कई मिशन जो हैं वो यूएस या फिर यूएसएसआर, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जापान के साथ मिलकर जापान ने जो है वो कोलैबोरेटिव मिशंस वीनस पर जो है वो लॉन्च किए हैं ऑलरेडी। नासा का जो डविंसी नाम से 2029 में प्लान्ड है, वेरिटास प्लान्ड है 2031 में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन प्लान्ड है 2030s में, फिर रशिया ने भी प्लान किया हुआ है, ठीक है, वेनेरा मिशन। तो क्यों इतनी एकदम से जो है वीनस के ऊपर जो है जाने की होड़ लग गई है? क्योंकि हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि प्लैनेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्लाइमेट चेंज, और जो लाइफ की क्या कंडीशन, लाइफ कैसे जो है वो मूव होती है एक्सट्रीम कंडीशंस में। और ख़ासकर 2020 के बाद जब हमें वहाँ पर वीनस में फॉस्फीन गैस मिली है, जो कि एक बायोमार्कर है, तो उससे डिबेट ये शुरू हुई है कि क्या वहाँ पर माइक्रोबल लाइफ अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसको ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं सब। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंसर्जेंसी फ्री त्रिपुरा। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो त्रिपुरा के जो सीएम हैं उन्होंने त्रिपुरा को इंसर्जेंसी फ्री डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि अभी कुछ मिलिटेंट्स ने वहाँ पर वेपन्स जो है वो ले डाउन किए हैं एक सरेंडर सेरेमनी में। तो त्रिपुरा में 19 इंडिजिनस ट्राइब्स होती थी,
कोक बोरोक वहाँ की लिंगुआ फ्रैंका है, ठीक है। और त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट होती थी, इंडियन यूनियन को एक्सीड किया 1949 में इसने, और 1956 में एक यूटी बनी और 1972 में फुल फ्लैज स्टेट बनी। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? जब ईस्ट पाकिस्तान से बंगाली रिफ्यूजीज़ जो है उनका मैसिव इन्फ्लक्स हुआ, तो ट्राइबल्स जो है वहाँ पर माइनॉरिटी बन गए जो त्रिपुरा के ट्राइबल्स थे। तो त्रिपुरा जो है वहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू हुई, क्योंकि जोग्राफिक आइसोलेशन हुआ, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हुआ, डिसफंक्शनल गवर्नेंस होता रहा, करप्शन रहा, ट्राइबल लैंड की एलिनेशन होती रही। तो TUGS नाम से जो है वो एक मूवमेंट शुरू हुई, जिसने कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो अंडर 6 शेड्यूल की डिमांड रखी। फिर इंसर्जेंसी जो है शुरू हुई TUGS के साथ, बाद में जब TNV बना, NLFT बना, ATTF बना, ठीक है। तो बंगाली पॉपुलेशन जो है वो, जो ट्राइबल्स जो डिमांड करते थे इस इंसर्जेंसी के थ्रू, उसको अपोज करती रही, इसलिए आर्मी को जो है वो बुलाना पड़ा 1980s में कंट्रोल करने के लिए। 1988 में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया बहुत सारी जो है ट्राइबल जो ये इंसर्जेंट्स ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि 1988 एग्रीमेंट की जो है कंप्लेंट रही कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रही है। तो इंसर्जेंसी दोबारा शुरू हुई 1996 और 2004 के बीच में। तो क्यों हुआ क्या कि उस टाइम पर बांग्लादेश और बाकी की कुछ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो है वो सपोर्ट देती थी इस इंसर्जेंसी को। तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाने पड़े। नेगेटिव परसेप्शन जो स्टेट में थी अमंग ट्राइबल्स, उसको भी जो है करेक्ट करना शुरू किया गया। जो हिपोक्रिटिकल बिहेवियर था इंसर्जेंट्स का, उसको जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के सामने रखा गया, ठीक है। फिर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भी शुरू किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम्स चलाने लगी। लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को जो है वो और मजबूत किया गया, ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस में ट्राइबल्स की पार्टिसिपेशन बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नगर वन योजना। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अचीव किया है 100 डे टारगेट ऑफ 100 नगर वन्स अंडर नगर वन योजना, जिसका ऑब्जेक्टिव है एनहेंस करना अर्बन ग्रीनरी को। तो नगर वन योजना एनहेंस करता है अर्बन ग्रीनरी को, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल कोहेशन जो है वो सिटीज़ में इम्प्रूव किया जा सके। तो स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस 4 लाख पर हेक्टेयर जो है वो दिया जाता है क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ अर्बन फॉरेस्ट के लिए। नगर वन एरियाज़ जो है वहाँ पर मिनिमम 10 हेक्टेयर टू 50 हेक्टेयर तक का जो है वो रेंज रहेगी। तो सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये स्कीम कवर करती है। तो हर नगर वन में कम से कम 2/3 जो एरिया है वो अंडर ट्री कवर होना चाहिए, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी पार्क, स्मृति वन, बटरफ्लाई कंजर्वेटरीज, हर्बल गार्डन्स और मैत्री वन जो है वो इंक्लूड होंगे। तो नगर वन योजना जो है वो 1000 नगर वन्स बाय द ईयर 2027 क्रिएट करना चाहती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मनकीडिया ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मनकीडिया कम्युनिटी जो है, जो 6th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बना है, जिसको हैबिटेट राइट्स मिले हैं फॉरेस्ट में उड़ीसा में, ठीक है। तो ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी है, सेमी नोमैडिक सेक्शन है ये बिरहोर ट्राइब का, और ये PVTG का इनको स्टेटस मिला हुआ है उड़ीसा में। प्राइमरीली फूड गैदरिंग और हंटिंग इनकी जो है ऑक्यूपेशन है, और ये एक मुंडा लैंग्वेज की एक फॉर्म बोलते हैं ये। बोथ मेलेवलेंट और बेनेवलेंट स्पिरिट्स और गॉड्स में ये बिलीव करते हैं। मेनली ये उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैप्सिस क्रेटर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक मैसिव इम्पैक्ट क्रेटर जो है वो अनकवर किया है, जिसका नाम मैप्सिस रखा गया है। तो ये अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझने में हमें हेल्प करेगा। तो मैप्सिस क्रेटर जो है इसको क्लासीफाई किया गया है नॉन कंसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स क्रेटर। 600 किलोमीटर्स अक्रॉस सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया ये लोकेटेड है। ये इम्पैक्ट जो है जब कब बना था ये क्रेटर, जब एडी एक्रन पीरियड होता था। तो मैसिव डिपॉजिट्स ऑफ मेल्ट रॉक यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो एडी एक्रन पीरियड कौन सा था? 635 टू 541 मिलियन ईयर्स अगो, जब अर्लीस्ट एवोल्यूशन ऑफ हमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो UN जनरल असेंबली ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर जो है अडॉप्ट किया है, जो समिट ऑफ द फ्यूचर जो अभी हो रहा था उसमें। तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर एक डेक्लेरेशन है, जिसमें ये रीअफर्म किया जा रहा है UN मेंबर स्टेट्स द्वारा कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस और स्ट्रॉन्गर ग्लोबल गवर्नेंस पर। तो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस एग्रीमेंट को जो है वो
के ऊपर और प्लेज दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हम सस्टेन करेंगे पीसफुल, इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटीज़ को। फिर रियलाइजेशन करेंगे एस्पिरेशंस ऑफ यूएन अक्रॉस ऑल 3 पिलर्स ऑफ इट्स वर्क। यंग लोगों को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाएंगे सिविल सोसाइटी के साथ। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CSIR-T पावर। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम फॉर द पावर सेक्टर को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, जो कि सर्ट इन के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। तो ये एक सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगा साइबर इंसिडेंट्स जो पावर सेक्टर में होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने में। तो साइबर सिक्योरिटी रिजिलियंस जो है इंडियन पावर सेक्टर में उसको एनहेंस करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा मेजर्स ताकि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जनरेट की जा सके, और इसको सेटअप किया जा रहा है अंडर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो सर्ट इन है क्या? नेशनल नोडल एजेंसी है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की, और सर्ट इन जो है वो 2004 से काम कर रहा है, ऑपरेशनल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रूल किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट वॉच करना जो है, या विदाउट डाउनलोडिंग इट, उसको भी हम पोजेशन मानेंगे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता क्या है? तो ये एक ऐसी लीगल डॉक्ट्रिन है जो कहती है कि आप के पास अगर आइटम, चाहे फिज़िकल कंट्रोल आपका नहीं भी है या इमीडिएटली आप उसको पोजेस नहीं करते हो, फिर भी हम मानेंगे कि आप उसे पोजेस कर रहे हो अगर आपका इंटेंट है। ठीक है, तो एक पर्सन का जिसका इंटेंशन या एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर आइटम अगर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो इंडिविजुअली हो या जॉइंटली, तो हम मानेंगे कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर चीज़ को पोजेस करता है। जैसे एग्जांपल से समझें, आपकी कार में अगर ड्रग्स मिलते हैं, चाहे आपकी कार कोई और चला रहा हो और उसमें ड्रग्स मिलते हैं, आप उस टाइम पर उसको फिज़िकली नहीं भी यूज़ कर रहे हो और आपके पास वो नहीं भी है, बहुत दूर कहीं जा रही है वो कार आपकी, और उसमें ड्रग्स मिल जाते हैं, तो उसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहती है कि क्योंकि आपकी कार है, आप उसको फिज़िकली चाहे उस टाइम पर नहीं भी चला रहे हो, तो उसमें ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको इसकी जानकारी थी, आपके पास आपका इंटेंट था, तभी आपकी कार में जो है वो ड्रग्स मिले हैं, और आपको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन के अंदर जो है वो ड्रग्स रखने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल रहता है उस आइटम्स के लिए भी जिसके पास जो उसके पास कंट्रोल है, पावर टू कंट्रोल है उसको, और चाहे वो पर्टिकुलर आइटम जो है वो फिज़िकली आपके पास ना भी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इलीगल ड्रग्स, फायर आर्म्स या स्टोलन प्रॉपर्टी के जो है वो केसेस में कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्ट्रिन का। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि इंडिविजुअल जो है वो अवेयर होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और डोमिनियन ओवर द आइटम जो है वो आप होना चाहिए कि आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके ऊपर एक्सरसाइज करने की। फिर एक इंटेंट भी होना चाहिए उस आइटम को पोजेस करने का। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Venus orbiter mission. This topic is important for your science and tech section. So recently, the Union Cabinet has approved India's first mission to the Venus, which ISRO is planning to launch in March 2028. This will be India's second interplanetary mission following the 2013 Mars orbiter mission. So this Venus mission aims to study the planet's surface, subsurface, atmosphere and ionosphere from orbit, and it will also investigate Venus' interaction with the Sun. So what is Venus orbiter mission? So the mission aims to send an orbiter around Venus so as to gather data on its climate, atmospheric composition and potential volcanic or seismic activity. The mission also aims to explore the signs of active volcanoes and provide insights into the planet's unique environment. So what is this Venus orbiter mission going to do? So it aims to investigate surface processes and subsurface stratigraphy. So this will study the structure, composition and dynamics of Venus atmosphere. It will also explore the solar wind interactions with the Venus ionosphere. So
Why particularly 2028? Because Earth and Venus comes closest every 19 months, making this particular timeline very crucial. So the mission will carry around 100 kg of scientific payloads and follow a similar approach like that of India's previous space missions. So these payloads will conduct experiments to study the flow of interplanetary dust particles as well. So this mission will also mark India's first attempt at aerobraking, which is a technique to slow down the spacecraft using atmospheric drag. So this India's mission will initially place the satellite in a highly elliptical orbit around Venus so as to save fuel. This process will take about 6 months, which requires precise control as well. So once the desired orbit is achieved, the satellite will exit Venus' atmosphere so as to avoid using excess fuel to maintain its orbit. Okay. So Venus is often called the Earth's twin due to its similar mass, density, and size. Scientists also believe Venus once had water, but it is now dry and dusty. So the surface temperature of Venus is around 462 degrees Celsius, which is hotter than Mercury because of a runaway greenhouse effect on Venus. Venus once believed to have oceans, but now it has become a sweltering greenhouse world. Scientists are also hoping to uncover clues about climate change, atmospheric dynamics, and planetary evolution so as to provide insights into Earth's potential future. But there are certain challenges as well. Like on Earth, the atmospheric pressure is just about 1 bar, but on Venus, it is about 100 bars. So its atmosphere is about 96.5% carbon dioxide with sulfuric acid clouds, and it rotates very slowly. You must be knowing that Venus rotates in opposite direction as compared to other planets. So one Venusian day is about 243 Earth days, and its surface temperature is about 462 degrees Celsius, and that's why it is hotter than Mercury. No lander has survived the extreme heat for more than a few hours here. So successful exploration would place India among an elite group of countries with advanced planetary science programs. So there have been several missions to the Venus in the past by US, USSR, Japan, European Space Agency. Okay, even the future missions of the on the Venus include the Vinci mission of NASA in 2029, the Veritas in 2031. European Space Agency's Envision mission is also being planned for early 2030s. Russia is also planning a mission which is under development, the Venera D mission. So why there is a renewed race to Venus? Because understanding planetary evolution, climate change, and potential for life in extreme conditions has become important on Earth, and we can do it by studying Venus also. So what happened in 2020 is that we discovered the phosphine gas there, which is a potential biomarker. So that's why in Venus atmosphere, the presence of phosphine gas has sparked the speculation about microbial life there. Okay. So the next topic is insurgency-free Tripura. This topic is important for your security section. So Tripura CM has declared the state as an insurgency-free state after 584 militants had laid down their weapons before the CM at a surrender ceremony. So the Tripura consists of 19 indigenous tribes, and Kog Borok is the lingua franca there. So Tripura was actually a princely state which acceded to the Indian Union in 1949, and it became a union territory in 1956, and it became a full-fledged state in 1972. So the massive influx of Bengali refugees from East Pakistan led to the indigenous population decreasing from 95% in 1931 to 31% by 1991. So tribals became a minority there, and this led to the problem of losing control over land, trade, government jobs, business, and sparking other grievances. So Tripura started experiencing insurgency due to geographic isolation, socio-economic backwardness, dysfunctional governance, rampant corruption, and tribal land alienation. So tribes formed this TUGS as to demand an autonomous district council under the 6th schedule. So insurgency particularly began in Tripura after the formation of TUGS and TNV, NLFT, and ATTF in successive years. So the Bengali population, which became dominant over the years, started opposing the tribal demands. So this became
cause of conflict between the Bengali population and the tribals. So that's why army was brought in to control the violence in 1980. A peace agreement was signed with the state government by the TNV in 1988, but there were complaints about the non-implementation of that peace agreement. So insurgency gained momentum again between 1996 to 2004, fueled by the logistical support from the Bangladeshi and other intelligence agencies. So the approach then later involved counterinsurgency operations. Then psychological operations were also launched so as to correct the negative perception of the state among the tribals. And this psychological operations also included highlighting the hypocritical behavior of insurgents and their exploitation of the tribal population. Later on, developmental initiatives were swiftly rolled out. Security forces also conducted civic action programs. Local governance institutions were strengthened so as to involve tribal population in the development process. Okay. So the next topic is Nagar Van Yojana. This topic is important for your environment section. So recently, Ministry of Environment has achieved the 100-day target of 100 Nagar Vans under the Nagar Van Yojana to enhance urban greenery. So this program was launched in 2020 to enhance the urban greenery for improving the quality of life and increasing social cohesion in cities. So the scheme provides financial assistance of 4 lakh rupees per hectare for the creation and maintenance of these urban forests. So Nagar Van areas range from a minimum of 10 hectare to 50 hectare. So this scheme covers all cities with municipal corporations, municipalities and urban local bodies. So each Nagar Van must have at least 2/3 of its area under tree cover, and components like biodiversity parks, Smriti Vans, butterfly conservatories and herbal gardens. Apart from them, Matri Van created under Ek Ped Maa Ke Naam. Okay. Presently, the Nagar Van Yojana aims to develop 1,000 Nagar Vans by the year 2027. So the next topic is Mankedia tribe. This topic is important for your social issues. So recently, Mankedia community became the 6th particularly vulnerable tribal group to get habitat rights over forests in Odisha. So Mankedia tribe is an Austro-Asiatic community which constitutes a semi-nomadic section of the Birhor tribe. So they have been identified as a particularly vulnerable tribal group in Odisha, and they are primarily food gathering and hunting tribes. They speak a form of Munda language. They believe in both malevolent and benevolent spirits and gods. They are mainly found in Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, and West Bengal. So the next topic is MAPSIS crater. This topic is important for your science and tech and your environment section. So Australian researchers have uncovered evidence of a massive impact crater which is named as MAPSIS, which could potentially revolutionize our understanding of Earth's geological history. So MAPSIS crater is classified as a non-concentric complex crater, and it spans an astonishing 600 kilometers across Central Australia. This impact is believed to have occurred at the end of Ediacaran period, and it includes massive deposits of melting rock, and it also includes the shock diamond. And what is this Ediacaran period? So this is an interval of geological time which ranges between 635 to 541 million years ago, and this period has produced some of the earliest known evidence of the evolution of multicellular or animals. So the next topic is Pact for the Future. This topic is important for your international relations. So UN General Assembly has adopted the Pact for the Future, which is a comprehensive agreement designed to reshape global governance for the 21st century at the Summit of the Future. So this Pact of the Future, or the Pact for the Future, is a declaration reaffirming the commitment of UN member states to sustainable development, peace and stronger global governance. So this sustainable development basically means commitment towards achieving UN's Sustainable Development Goal and Paris Agreement. So international peace and security is also being emphasized to build and sustain peaceful, inclusive and just societies. For science and technology, the states have reaffirmed their commitment to realize the aspirations of UN across all three pillars of its work. They have also reaffirmed that they are going to listen to the young people and include them in decision making, and build strong partnerships with civil society as well. So the next topic is CSIR T power. This topic is important for your governance section.
So Union Minister for Power has recently launched the Computer Security Incident Response Team for the power sector. So this was launched in collaboration with CERT-IN, and it will serve as the central agency for responding to the cyber incidents which involve the power sector. So the aim is to enhance cybersecurity resilience in the Indian power sector. So CSIRT PAR will also implement measures to raise cybersecurity awareness, and this facility has been set up under the Central Electricity Authority. So what is certain? It is the national nodal agency for responding to computer cybersecurity incidents, and it is a functional organization within the Ministry of Information and Electronics Technology, or Ministry of Electronics and Information Technology. So it has been operational since January 2004. Okay. So the next topic is doctrine of constructive possession. This topic is important for your polity section. So invoking the doctrine of constructive possession, Supreme Court has recently ruled that watching child pornography over the internet without downloading it would also amount to possession. So what is this doctrine of constructive possession? So it's a legal doctrine which attributes possession of an item or a substance to an individual, even if you have not if you do not have a physical control or immediate possession of it. So like I was giving you an example earlier, that if your car is parked, let's say even 2 kilometers away from your home also, but if the drugs are found in that car, even if that car is not in your physical control at that moment, or you are not driving it, it would still be considered that you are in possession of those drugs, because that car is owned by you. Okay, even if you do not have a physical control over your car at that moment, or it is not even in your home or at your vicinity, it would still be assumed that you have constructive possession of those drugs, and you have the intent, and because you have the intent and ability to exercise control over your car, or that substance which has been found in your car, either individually or jointly with others. So that's why the responsibility of those drugs would be put on you. Okay, so that's why constructive possession often arises in cases which involve the illegal drugs, firearms, or stolen property. Okay, but there are certain criteria which have to be met so as to apply this constructive possession doctrine. First, the individual must be aware that this particular item exists, and the person must have the capability to maintain dominion over that item, which means that he has the power and intention to control its use, and there must be an intent to possess that item also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.